मगर यूके जान वास्ते मैं कहना is one of probably the best universities in the world. Courses from degrees to masters. Study masters courses are 1 year compared to 2 years to a lot of countries. More importantly, after your studies, काम करने की परमिशन मिलती है during your term times up to 20 hours, off term time 40 hours काम कर सकते हैं. More importantly, after your studies complete करने बाद तुम्हें 2 साल तक ओपन वीज़ा भी मिलता है जिन्हें आप पोस्ट स्टडी वर्क करते हैं. मैं कहना है कि किसने के अच्छे ढंग से पढ़ना अपने फ्यूचर बनाना है. It's a brilliant place to go. People compare sometimes England to Canada, to Australia, to even Europe. Yes, those places have opportunities. But जो इंग्लैंड की डिग्री है, I would always say has always been one step above, in my opinion. If you're within London, थोड़ी expensive थोड़ी ज़्यादा होनी है. So your maintenance requirements is a little bit more than if you're outside of London, which is something to bear in mind. Otherwise, tuition fees मैं mention करता है, थोड़ा 11,000 की tuition fees भी मिल सकती है. A Russell Group University will charge up to 24,000 pound a year. न राजा न रानी न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रांत और आज मेरे साथ जो शख्स हैं वो करीबन 3 दहाकों से हिंदुस्तान के बच्चों को यूके में सेटल होने के लिए, वहां एजुकेशन लेने के लिए गाइड करते आ रहे हैं। मेरी मुराद है सॉलिसिटर मिस्टर गुरपाल उप्पल जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत जी, सत श्री अकाल जी, एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून इन इवनिंग टू यू गाइस। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा पहला सवाल कि आज के टाइम पे क्या करंट अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या चैलेंजेस जो हैं बच्चे फेस कर रहे हैं यूके जाने के लिए? I think the very first important चीज to realize है कि ਤੁਸੀਂ यूके जाना हैगा, you got to have the ability to speak English. It's very very important. ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ with and without IELTS. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੈਕੇजेस ਬੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਪਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। We should have a clear path moving forward. किसने का वकील बनना हैगा, then obviously he follows a line of law. किसने की इंजीनियरिंग करनी हैगी, then obviously वो अपना फील्ड हैगा। मगर यूके जान वास्ते मैं कहना is one of probably the best universities in the world. Courses from degrees to masters. Study masters courses are 1 year compared to 2 years to a lot of countries. More importantly, after your studies, काम करने की परमिशन मिलती है during your term times up to 20 hours, off term time 40 hours काम कर सकते हैं. More importantly, after your studies complete करने बाद तुम्हें 2 साल तक ओपन वीज़ा भी मिलता है जिन्हें आप पोस्ट स्टडी वर्क करते हैं, which then leads you to possibility of working. कोई स्किल काम के तुम्हें मिलता है, लगातार 5 साल कार्य करो तो वो बाद तुम्हें PR भी मिलती है. So England has always been a land of opportunities. मैंने तो 25-30 साल हो गए वैसे वकालत कर देना, पर मेरा जंपल भी यूके है। मैं आप खुद यूके की यूनिवर्सिटी च पढ़िया है, मैं खुद अपनी वकालत की हैगी है। सो मैं कहना है कि किसने के अच्छे ढंग से पढ़ना अपने फ्यूचर बनाना है। इट्स अ ब्रिलियंट प्लेस टू गो। पीपल कंपेयर समटाइम्स इंग्लैंड टू कैनेडा टू ऑस्ट्रेलिया टू इवन यूरोप। यस, दोज प्लेसेस हैव अपॉर्चुनिटीज, पर जो इंग्लैंड की डिग्री है आई वुड ऑलवेज से इज ऑलवेज बीन वन स्टेप अबव इन माई ओपिनियन। राइट, वेल सेड सर। सर इस टाइम पे पॉपुलर कोर्सेज और किहड़ियां यूनिवर्सिटीज़ हैं जिहड़ियां ऑफर कर रही हैं? So popular courses and universities. There are a lot of courses that are well worth applying for. In fact, किसनों की advice which I think you can always have my citizens and my team both in UK and Punjab from study planning to express immigration. But courses, I always say, all course तो ਉਹ यूनिवर्सिटी पहलू चुनो जो first of all within your budget है। तो मैं budget की गल पहलू करन लगा है because courses जो है तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ करते हैं, मगर कई बार कोर्सेज स्कॉलरशिप्स जो है वो कई 11,000 पाउंड का भी है साल का, तो कई बार 20-22-24,000 का भी होंगे इफ यू गो टू अ रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी। अगर आप 3 साल का कोर्स देखिए, दैट सेम कोर्स कैन कॉस्ट यू आइदर 30 lakhs or 60 lakhs. So budget is very very important. The courses, the most popular courses depends on whether you are a medical or non-medical. A lot of बच्चे पंजाब they usually opt for usually finance courses. Healthcare is becoming very popular because UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ shortage occupation ਹੈਗੀ ਸੀ, which has now been taken away. मगर health and care worker, social care worker products have always been very popular. Engineering once again, law, a lot of people want to go into the field of law has always been there, and medicine ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ. So all these universities are very very good. The other good thing is a lot of the universities जो UK ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, they now have campuses up and down the country.
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਡਰਲੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਰਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। These are courses up and down the country, but they sometimes have London campuses, which is something worthwhile looking at too. ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੂਗਾ, because his travel up and down will be so far. ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, obviously it's better to go and live with them because you have free food and accommodation. ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So these are sort of budgeting and sort of issues that you should look at when you apply for any course. But once again, any assistance with any courses, you know where to come to. Myself and my team at Study Planet or Express Immigration. Wonderful. So financial planning tips that you would like to offer? कोई financial tips और scholarships क्या-क्या offer हो रही हैं, ये दो चीज़? I briefly touched on this. मैं fair कोई दास्ताना. We have some universities which are offering up to £5,000 in scholarships, which are well worth taking. But the best students are usually those that have high marks in their either IELTS ਜਾਂ ਆਪਣੇ CBS board ਤੋਂ at least 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ marks ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। So if you're one of those students that have a high grade in your English marks, you'll have a better opportunity to choose various courses at various universities. The funding, well, it's very simple. If you're within London, थोड़े expenses थोड़े ज़्यादा होंगे, so your maintenance requirements is a little bit more than if you're outside of London, which is something to bear in mind. Otherwise, tuition fees मैं mention करता है, थोड़ा 11,000 की tuition fees भी मिल सकती है. A Russell Group University will charge up to £22,000-24,000 a year. Yes, there's a difference in the quality and the caliber of the university and the lecturers as well. So once again, these are all things you should look at. Obviously, if someone wants to go Oxford or Cambridge, you're now looking at elite along with Imperial. But courses, universities में fair करना है, guidance is very, very important, and that's where good counselling really counts. तो मैं fair करना है. For good counselling, you know where to come to. Myself and my team at Express Immigration or Study Planet. जनाब, अभी आप बात कर रहे थे CBSE स्कूल का, आपने जिक्र किया, जो ICSE बोर्ड के बच्चे हैं और जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं, आप उनके लिए भी सेम ही कंडीशंस हैं? Always the same. I always say one thing, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। If you're going to have difficulty in understanding a lecture, a tutorial, you'll have difficulty in passing your exams. ਤਾਂ unfortunately ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਯੂਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, then I'm afraid ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ is not for you. then ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। but if you're a good caliber student and you have the ability and the want to study, then मैं कहूँगा you will not have any problems. Wonderful. So post study work opportunities, उस पे थोड़ा सा आपने टच किया, थोड़ा और बता दीजिए। I think one beautiful thing that Boris Johnson under his previous government, under the Conservative government, उन्हें शुरू किया गया सी एक graduate route, which is a proper formal name for the post-study work, जो पुराने समय च ना दिता गया सी. And this is an open visa for 2 years to come and after your studies to work openly. So you don't have to have an employer. It doesn't matter what quality of work it is, whether you want to work in a factory or whether you want to work in a law office or whether you want to work in any field, in any area. So it's totally open hega. Otherwise, what happens is when you apply for a work permit, you could have a specific skill set and a specific salary. The threshold is actually quite high now. It's usually 38,700, but UK the graduates, it's been lowered to 31,000 as a new entrant. But these are also factors to work in account, because if you're going to go to UK, ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ for the first year. Second year, it may be possible to fund it by your working, and obviously ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, the 2-year post-study work is very, very important to help you maybe alleviate that burden of that loan. ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਡਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। They also have to pay a fees. It's usually around about £10,000. So fees, tuition fees, having that as a burden, yes, it may sound daunting, but I think it's an important thing to have because it helps you maybe mature once you start working, because Karzak Salona is very important as a responsibility. Yes, well said. सर, मेरा अगला सवाल आपसे जनाब, कि बच्चे वहाँ पढ़ने तो चले गए, फिर वहाँ वर्क परमिट भी मिल गया, अगला स्टेप हर एवरेज इंडियन का यही होता है, मैं वहाँ परमानेंट सेटल हो जाऊँ, तो उसके ऊपर आप क्या बताएंगे, क्या ऑब्जर्वेशन? देखो, सिर्फ पीआर नहीं, पीआर के बाद ब्रिटिश पासपोर्ट भी चाहिए जी, सारी चीजें जी, महत्वाकांक्षा है जी। तो everything is possible if you follow the format. The good thing about the UK immigration law is everything is online. You can follow it.
आई नो सोशल मीडिया के उपर बहुत काउंसलर्स बहुत वकील बैठे अपने आप क्लेम करते हैं, दे नो एवरीथिंग एंड मेक्स एवरीथिंग सिंपल, बट द रियलिटी इज कि तुसी अच्छे स्टूडेंट है, तुसी अपनी रिसर्च खुद भी कर सकते हैं। Yes, you have good counselors, but also you have your own brain to use, and you have the internet which tells you everything. So step by step, the easiest way to get PR. Let's run through it. First of all, do your degree or your masters. Second, you have the opportunity going for 2-year post-study work, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ। During the 2 years, you find a good employer ਜੇ ਕੋਈ sponsor license ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ skill position ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ working for that company ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ step by step ਵੱਖਰੇ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ PR ਮਿਲਦੀ at the end of the 5 years. So the shortest period a student get PR is 6 years. 1 year if you do your postgraduate degree, and if you go straight to work, skill job, फिर थोड़े 5 साल. So you can skip the post study work in between है कि तुम काम मिल जाता है। Otherwise, if you continue studies, हम जब तक कई 3 साल के डिग्री कोर्स ते जाते हैं, 3 साल के बाद फिर तुम 2 साल पोस्ट स्टडी वर्क, ये तो थोड़े 5 साल हो गया। Once again, another 5 years. Then also count towards a 10-year route if you want to switch back to studies. Okay, वापस PhD करना चाहते हैं, further research करना चाहते हैं। And the good thing about UK ਦੇ ਵਿੱਚ बेशक इन्हें dependent visa बंद किते हैं for husbands and wives. If you're doing a research program or you're doing a PhD, you are still allowed to bring your spouse with you and बच्चे। And if you do a PhD, ਜਿਹੜਾ पोस्ट स्टडी वर्क है वो फिर 2 साल का नहीं है, वो 10 साल का है। वाओ, अमेजिंग। सो मेरा अगला सवाल आपकी तरफ कि इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसी में कोई लेटेस्ट चेंजेस अगर आपने कुछ शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? तुसी कोई भी पेपर खोलोगे, अपने इंटरनेट खोलोगे, तुसी ट्रम्प वाल देखोगे, देयर इज ऑलवेज समथिंग हैपन विद इमिग्रेशन अराउंड द वर्ल्ड। इन फैक्ट आई थिंक आफ्टर ट्रम्प टेकिंग आउट अ लॉट ऑफ हिज इमिग्रेंट्स, बाकी दे मुल्कां ने ना कोई शायद इन्फ्लुएंस आई हैगी। One major requirement in UK government policy has always been to reduce net migration. Net migration is number of people UK आउंदे आ ते वापस बाहर जाते हैं। Unfortunately, over the last 10 years plus, it's always been over 500,000, over 500,000 हर एक साल UK जाके बस रहा गया। तो कहते ये net migration ਆਪਾਂ reduce करनी है। So reduction ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ slowly tight ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਸੀ, ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਗਰ ਦ UK still wants skilled workers, highly skilled workers, and also when it comes to students, ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ UK ਆਏ। Why? Because student ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ is a £1 billion industry। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ UK ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, पर ये चाहते हैं कि जो बच्चे आते वो जेन्युइन आए, जो बच्चे आते हैं उन्होंने एक मौका भी मिले। सो द पोस्ट स्टडी वर्क इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट एक मैं कहना ऑप्शन है बच्चों लिए जो UK पढ़ाई देख रहे हैं। यस, गलबात हुई है या कहने वास्ते शायद ये 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क 18 महीना कर दिया, मगर ये 6 महीने होए, साल होए या 18 महीने, अपॉर्चुनिटी तो तुहानू हैगी है, इज स्टिल समथिंग फ्रॉम यू टू वर्क विद। And you'll hear from the 22nd of July, there are further changes coming to UK when it comes to policies and by the end of the year. So main changes की आ रहे हैं, it's not really for the students, it's those who are coming on work permits. Like threshold हैगा ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ for your minimum salary, it's going to go up from 38,000 to roughly 42,000 pounds. Above that ਜਿਹੜੀ एक shortage occupation list ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ skilled ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ changes ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। मगर ये सारी observation नाल दी नाल हो रही है to make sure that people come as skilled workers with a minimum degree level। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ +2, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਡ, ਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਆਏ। राइट सर, आप एक वर्ड में, 1 word में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं ये जो डंकी लगाकर इधर उधर निकल जाते हैं? 1 word for them। You know, it's not even 1 word. The whole concept of donkey, unfortunately, it Punjabi to share shuru hai Indians, I don't know. In fact, donkey the actual loves we, I remember first time I ever heard it was when I used to be an asylum lawyer। जो लोग 2 नंबर UK आते थे उत्ते आके पनाह मंगते किसी ਏਜੰਟਾਂ नहीं आते होंगे सी। They had no opportunities, ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, and they had no option but to apply for asylum। ਮਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਏ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ,
ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ that was a route used by Europeans. I think so European loves donkey. I don't know if it's German ਜਾਂ Swedish ਕੀ ਹੈਗਾ, but it used to be used as that mode of trafficking into the UK. But it's the wrong way to come. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ illegally 2 ਨੰਬਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. When you have policies of the world of different countries, the only thing is you got to follow those policies. ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ. ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਫੰਡਸ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ. ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਕਾਮ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ when you use the wrong means and wrong methods of going abroad. So सच्चाई is what you need, not a donkey. सर स्टूडेंट्स कल्चरल शॉक होता है, एकेडमिक तरीका यहाँ पढ़ने पढ़ाने का अलग है, वहाँ कुछ और है, तो हाउ टू ओवरकम दैट? देख 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੜ ਹੈਗਾ ਆ. ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ. And yes, अपनी तरक्की करने वास्ते you need to make sure your experience are enhanced. Like, my birth was UK. My first language Punjabi नहीं सी, nor it was Hindi. It was English. है ना? ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ obviously I learned both languages. है ना? And ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ you then go abroad. I've come to India. I've come to you guys to guide you, to help you. Why? To make sure I can maybe be a role model to you guys and say, look, I'm going abroad to work. ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ट्रैवल करके पढ़ाई करके वर्क कर सकते हैं. So these are all important things once again to take in mind. Right. So मेरा अगला सवाल, किस किस्म के जो है बच्चों को आप सपोर्ट सिस्टम यूके में आपको लगता है कि मिलते हैं? Look, I think the most beneficial thing of coming to study Planet Express Immigration and myself is not just getting guidance and counselling in UK, but you have a team in the UK who can then also help you. Don't forget, I'm one of the few lawyers in the UK and Punjab maybe that gives initial free advice. We don't charge for any advice. You'll see me on social media, you'll see me on Punjab radio, you'll see me on Punjab TV, you'll see me on my podcast giving regular advice on a regular basis. And any student that comes to my office for advice who are in difficulties, it's all free of charge. There's no reason for me to charge money when I'm just guiding you in which direction. And I suppose that reason comes from when I was a child. My parents weren't educated like myself. So what happened was I would then always help them with their applications. तो उसके पीछे क्या reason है? I think what it is, meeting like-minded people is very important. Making sure students are guided in the right direction is very, very important. So you guys, City Institute, are helping students with something which is very, very important, something very dear to me. Education. It's the one thing of quality in your life that no one can take away from you. And I suppose having you guys having assistance and guidance when you have many, many people around you to give advice is something I think is I can give back to Punjab. And if it means I can give something back to Punjab via your services, via your institutes, I will always be more than happy to come along and give my free advice. Like I said, Express Immigration, Study Planet. We've been doing this for the past 25, 30 years. We know what we talk about. So making sure that you know what's happening in the right format and the right manner is so important. So I'm happy to be available, and I'll make sure whenever I'm coming to India, I'll come and see you guys. I'll come and do seminars. I'll make sure my team behind you are always there to come and assist you guys to make sure there's something that you do, and whatever decision you make, whichever way you want to go, whichever country you want to go to, you have an informed decision. And having an informed decision is so important. गुरपाल उप्पल जी, 3 दशकों का आपका एक्सपीरियंस है. सो इतने लंबे तजुर्बे के बाद आप पंजाब को, हिंदुस्तान के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑन पॉइंट भारत के इस मंच द्वारा? Don't forget your Bharat. Don't forget your Punjab. अगर तुम बाहर जाके अपनी तरक्की करनी है, बाहर जाके अपनी एजुकेशन करनी है, maybe come back and share some of that knowledge back in Punjab and Hindustan. कि इंडिया तो ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਮੇਰਾ ਜੰਪਲ ਬਾਹਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ
And by doing that, we're now creating jobs in Punjab for females जो अपने घर-बार चला रही हैं. So if you come to any of my institutes and my organizations like Express Immigration Study Fund, you'll find guys, girls जो अपनी कमाई करते हैं, पेट घर दी रोटी पानी कमाते हैं. And I think that's very, very important. Always make sure you give back something to where you came from. मापे थोड़े हैगे ही है, पर पंजाब ही हैगा. Well said. तेरी मेरी कहानी में ऑन पॉइंट भारत पे सॉलिसिटर गुरपाल सिंह उप्पर जी ने हमें एक बहुत गहरी बात बताई कि सही तरीके से कानून के दायरे में रहकर आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें और फिर बाहर पढ़ने जाएं, क्योंकि यहाँ सवाल आपका है, आपके भविष्य का है और भारत का आपका भविष्य उज्जवल होना चाहिए. नमस्कार, धन्यवाद. धन्यवाद सर.